सो हेलो सैसी पीपल, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट। और आज का हमारा एपिसोड होने वाला है इंस्टाग्राम के बारे में, जो 2021 में ट्रेंड्स होने वाले हैं। तो आई बिलीव, एटलीस्ट आई थिंक ये एपिसोड थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। सो इसलिए आई इन्वाइटेड डॉक्टर खुशबू पांड्या, हु इज इंडियाज फर्स्ट पीएचडी इन सोशल मीडिया, एंड शी ऑल्सो रन्स अ सोशल मीडिया एजेंसी कॉल्ड कॉन्वोफिलिया। तो आज हम खुशबू से बात करने वाले हैं कि 2021 में आपको अपने पर्सनल ब्रांड को या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंस्टाग्राम पे क्या करना चाहिए। सारी बातें होंगी, चाहे वो स्टैटिक पोस्ट हो, वीडियो हो, स्टोरीज हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रील्स के बारे में, क्योंकि रील्स आजकल सबसे ज्यादा फोकस में है एंड वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद देम कि क्या कंटेंट बनाए। तो इसलिए चलिए फिर पूछते हैं डॉक्टर खुशबू पांड्या से कि उनको क्या लगता है कि क्या ट्रेंड होने वाले हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे 2021 में। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Macleod. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So Dr. Khushbu Pandya, I am thrilled to welcome you on Little Fixes. Welcome. Thank you. Thank you so much, Maitri, for inviting me to the Little Fixes podcast. And I'm so excited that you reached out to me on Instagram and we are having this podcast together. I am really looking forward to all your questions and have a great conversation with you and with all your listeners of Little Fixes podcast. Okay, so थोड़ा सा हमें ये जरूर बताइए, how did you get this idea to do PhD on social media? Because we were just having this chat कि आपने 2009 में you saw the potential कि if you study more about social media, तो it is the future basically. तो आपको ये idea कहाँ से आया और आपने क्या किया अपनी PhD में? Right. So I got this idea. It was just something I wanted to do in marketing. मतलब मैं management student हूँ, मैंने MBA किया है, and I was just researching कि marketing में क्या नया चल रहा है, कौन सा trend नया चल रहा है जिसपे I can do PhD. So वो research करते करते I just came across this word social media marketing in 2008. And you can remember that, like I can remember very nicely. I was still using Orkut. Facebook बहुत नया आया था, 2007 में just launch हुआ था, and 2008 में people were still struggling कि ये Facebook कैसे use करें, all that thing. तो वही से शुरुआत हुआ, and I was just happy to interact with people across the world. I felt the power कि social media has this amazing power where I can be anywhere in the world, like because I reside in a very small city based in Bharuch. It is in Gujarat. So at that point of time I was in Vadodara, and I always felt that I'm a small town girl, and this power of social media made me felt immensely happy that I could connect to anyone in the entire world through social media. So wo soch leke, and then I thought, why not apply it in marketing? And if anyone wants to grow their business, they need customers, they need people to buy their products, and what good it would be other than social media, where with the comfort from home or your office, you can sell your products to the entire world. So that simple idea made me think one thing कि चलो इसके ऊपर और research किया जाए, and वही process I just willingly and passionately followed, and that's how I just did my PhD in this subject. It took a long time. It took me almost 3 years to complete, and before even starting, it took me 7 to 8 interviews to convince my research panel and everything. But yeah, hopefully I completed it in 2014, and yeah, rest is all I'm happy that my intuition was good enough to go for. Yeah. तो आपने 2009 में ही सोच लिया कि social media is going to be big. And honestly, I don't think I even knew the term social media. मुझे बस Facebook और Orkut पता था. Social media, I don't think इतना ये term ही in itself popular था उस time पे, and you went ahead and studied that. So you obviously are an expert, as I have seen from your work on Instagram and on your website. तो हम लोग start करते हैं सबसे पहले कि Instagram पे
इस साल अकॉर्डिंग टू यू सबसे ज्यादा क्या चीज ट्रेंड करने वाली है? Okay, I think you already know the answer. It's definitely Reels. Because Reels is giving an instant gratification kind of thing. I mean, it is giving people an opportunity to express themselves in 15 seconds and 30 seconds, and you can make n number of, मतलब जितना creativity डालो उतना कम है reels में, and people are doing amazing jobs showcasing it for their businesses, their personal brands, their creative businesses, DIYs, travel, trips. मतलब कोई imagination की limit नहीं है when you talk about reels. So, and also when you just post it, it gives you an instant reaction from people. When you use the trending songs, there's this strategy कि मतलब अगर trending songs पे बनाते हो तो it gets viral very quickly, because of the one reason कि जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है जैसे सॉन्ग्स, बिलीव मी, म्यूजिक हैज एन इम्पैक्ट ऑन रील्स, बिकॉज इवन इफ यू नो टेक आउट योर फोन एंड चेक आउट द रील्स, तो आपको पता चल जाएगा कि 10-15 गाने जो अभी चल रहे हैं रील्स में, तो वो यू विल आल्सो फील लाइक कि चलो आई विल आल्सो मेक अ रील ऑन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग ऑन इट. सो दैट इज दिस पर्टिकुलर मेंटालिटी एंड द पर्सपेक्टिव्स दैट कीप्स ऑन motivating people to create reels and that gets viral. तो लोग स्ट्रगल भी बहुत कर रहे हैं रील से, बिकॉज एज यू सेड कि म्यूजिक जो ट्रेंडिंग होता है उसके ऊपर वी क्रिएट कंटेंट, बट ऑब्वियसली इंस्टाग्राम इज फोकसिंग ऑन रील्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन रील्स. एंड अगेन अ लॉट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो दे आर लाइक हाँ करना है इसलिए कर रहे हैं, बट वी आर नॉट पर्टिकुलरली एंजॉयिंग इट. तो ये जो इंजॉय करने वाला आइडिया है, आई थिंक इसके कई रीजंस हो सकते हैं. मे बी दे आर शॉर्ट ऑन टाइम कि बार बार वीडियो बनाना पड़ सकता है, या फिर आइडियाज नहीं आते कई बार लोगों को, और थोड़ा वीडियो के लिए आई थिंक सेटअप भी ज्यादा अच्छा चाहिए कि आपको थोड़ा रेडी भी होना है, फोन का एंगल भी सही होना चाहिए, और खुद ही शूट भी करना पड़ता है इन मेनी केसेस. तो ट्रू. आपके अकॉर्डिंग अगर हमें रील कंसिस्टेंट रहना है रील को लेकर अपने सोशल मीडिया पे, तो इसके बेसिक्स क्या हो सकते हैं, जिससे कि मतलब जिसे कहते हैं ना बेयर मिनिमम, कि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए जिससे कि हम रील में कंसिस्टेंट रह सके, नॉट लाइक मी कि एक रील बना दी और उसके बाद फॉरगेट अबाउट इट. राइट. सो सबसे पहली बात जो आपने शुरुआत में ही बोला वाज दैट कि बोर हो जाते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इंस्टाग्राम क्यों कर रहे हो, सिर्फ आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या बिजनेस के लिए एसेंशियल है ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, इसीलिए यू हैव टू फील द पावर फर्स्ट योरसेल्फ कि मैं वो एक विजन होना चाहिए कि इंस्टाग्राम क्यों करना है, वो गोल आपको आपकी बिजनेस में क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाई यू आर डूइंग इट. इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, तो कितना भी आप उसमें एफर्ट लगा के कर लो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस. सो रील्स के लिए भी आई थिंक दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्यों करना है. और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स are clear कि okay, I want to grow my business, that's why I want to do reels. I want to increase the views of my business या मेरा personal brand. तो जो भी आपके goals है about your account, it not be a business, it can be personal brand, it can be a DIY, it can be a motivational account, it can be inspirational account. तो जो भी account है, जो भी आपका Instagram में presence है, उसमें reels क्यों करना है वो सबसे पहले you have to be clear about it. Second is definitely content ideas. हर एक बार, I mean, it's a constant thing. वो आपको हर बार नहीं आएगा. So जब भी आपका इनोवेटिव मूड हो या क्रिएटिव माइंडसेट चल रहा है और आपको अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, बैठ के यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि अच्छा मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो मैं इसको किस तरह से दिखा सकती हूँ या किस तरह से क्रिएटिवली इसको पुट अप कर सकती हूँ. कैन राइट एन नंबर ऑफ आइडियाज. आप दूसरों की रील्स देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉपी करो, लेकिन इंस्पिरेशन के लिए चेक आउट व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, other people are doing in your space. Let's say if you are a makeup artist, right? Then what other makeup artists are doing. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो जो लोग कर रहे हैं वही आपको करना है.
आपको इसके बाद में ये सोचना है कि इससे अलग मैं क्या कर सकती हूँ, so that people can really understand that okay, I'm really good in my art, right? So ये सारी चीजें you have to think upon, and you can write it down in somewhere in your diary or whatever it is, and then you can just start shooting yourself. और ये भी एक बहुत बड़ा myth है लोगों में कि अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा बैकड्रॉप होना चाहिए for shooting and everything. I would just like to break this myth. You have your phone and Instagram just wants you to use your phone, that's it. कोई कैमरा से अलग रील शूट करने की जरूरत नहीं है. Just shoot it with your phone, save it and then edit it. अगर एडिट करना ही है उसको, अगर नहीं करना है उसको रॉ रखिए. जैसे भी आपकी क्रिएटिविटी है, you can create it from your phone, edit it from your phone and upload it on your phone. Do it everything with your phone. Everything is possible. You can have n number of ideas. I like if you go in my Instagram account, I have given lots and lots of Instagram reel ideas कि मतलब आप कैसे कर सकते हो reels. And trust me, there are so many other social media experts on this platform right now जो अपनी creative thoughts express करते हैं free of cost. So why don't you just, this is my advice to all the listeners of Little Fixes podcast, that why don't you just follow a few of the social media experts around the world, from your city, from other cities from around the world, and check out their reels कि वो लोग क्या advise कर रहे हैं, implement their advices, and then you can definitely see the results कि आपको फर्क आएगा. Until and unless you don't implement things, you will not. तो ये एक्चुअली स्विमिंग जैसा है. जब तक आप पानी में जाएंगे नहीं, स्विम करना चालू नहीं करेंगे, तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी. सो एंड द होल सोशल मीडिया industry is like that. Until you don't try it yourself, you don't implement and apply it yourself, you will never understand the power. Because वो एक feeling, वो satisfaction level ही अलग होता है when you do it and you apply it and it really works. And sometimes it will not work. Let me be honest, I'll not give you the glossy picture also. मेरी खुद की reels 2 to 3 reels might have gone, have reached 10k, 11k, 12k views. Some of the reels are just 100 views, 200 views, 300 views. So don't get disappointed or disheartened कि अच्छा वो reel तो 10k पहुंच गई थी और ये reel सिर्फ 100 है. So it happens to lot of people. You just have to keep doing it consistently. मगर जैसे अगर आप एक दिन में एक रील कर रहे हो या एक वीक में 2 रील कर रहे हो, whatever your consistency is. Again, I would just like to mention it here. Consistency का मतलब ये नहीं है कि हर रोज. Consistency का मतलब ये है कि you put it your consistent efforts कि according to your schedule. कि आपके schedule में क्या है, दिन में एक रील या वीक में एक रील या वीक में 2 रील, whatever your schedule is, be consistent on your schedule. So that is what consistency means. So if you put out consistently reels or for that matter any of the content on Instagram, Instagram is going to identify you as a genuine person, as a person who Instagram के rules actually बहुत simple है. उसको यही चाहिए कि आप human बने रहो, bot मत बनो. Human से human interaction करो. Search out people, try to interact, give genuine compliments, write valuable things on other people's posts. And just be human on Instagram, and Instagram will notice that you are a human, and it will promote your content to people who Instagram thinks might like your content. ओके. सो आज जितने भी कंटेंट के फॉर्मेट्स हैं इंस्टाग्राम पे, लाइक हमारी स्टैटिक पोस्ट हो गई या वीडियोस हो गई या स्टोरीज हो गई, सब में वी गेट इनसाइट्स. रील्स में अभी तक इनसाइट्स नहीं आया है, बट वी आर श्योर कि आएगा जल्दी ही. तो वी मोस्टली क्वांटिफाई अपनी जो सक्सेस है रील्स की बाय इट्स व्यूज. तो अब हम लोग व्यूज बढ़ाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लाइक यू सेड कि कंसिस्टेंट रहो, उसके सिवा भी क्या कोई स्ट्रैटेजी है कि वी कैन इम्प्रूव द रीच ऑफ आवर रील्स, हैशटैग्स और मे बी जैसे म्यूजिक, मतलब क्या कर सकते हैं? Hashtags is definitely one of the strategy. Let's say if you're starting reels for the first time and you want to just understand that how is this working, you can follow some of the people in your industry और सोचे कि आपके customers क्या hashtags डाल सकते हैं. तो वो हैशटैग सर्च करके
or when you search that hashtag, now Instagram gives you the first left right section में आपको एक रील्स का मिल जाएगा हर एक हैशटैग के सर्च में. You can just have a look कि वो हैशटैग पे कैसी कैसी टाइप्स की रील्स आ रही है. Is it something which is relatable to your content? अगर नहीं है then don't use that hashtag. That is one of the thing कि आप सर्च से आइडेंटिफाई कीजिए कि ये हैशटैग आपके लिए प्रॉपर है या नहीं है. It also applies on posts also. Let's say if you're searching hashtag podcast or let's say hashtag mental health podcast for example. तो वो hashtag search में are you getting the types of post which is related to that hashtag or randomly are? Because कभी कभी क्या होता है पहले से when people did not put so much thoughts into the hashtag, content कुछ और होता था और hashtag कुछ और होते थे. So अभी इतना अभी भी बहुत लोग, लेकिन मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए रणवीर दीपिका हैशटैग ट्रेंड हो रहा है ना, तो पीपल कुछ भी कंटेंट होगा उसमें रणवीर दीपिका लिख देंगे. एग्जैक्टली. तो ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि आपका कंटेंट एक सही से इंडेक्स्ड फॉर्म. ये मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगी कि लेट्स से हम लोग जब छोटे थे तब वी यूज्ड टू राइट इंडेक्स इन आवर बुक्स कि भाई अंदर कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं ये बुक के अंदर. तो हम लोग वो शिद्दत से पेंसिल और स्केल लेके वो बनाते थे इंडेक्स, राइट? So this is exactly the same thing. You are indexing your content that कौन से पेज पे क्या आने वाला है. I mean कौन सा content किसके related है. So if your reel is something related to travel, then you should write content or hashtags which are related to travel and describe everything about what is happening in that reel. So let's say if it's driving, it's a car, it's a red car, it's a red lipstick, whatever is in the picture जो आप सोच रहे हो, तो उसको define कीजिए and then before putting that hashtags एक बार फिर से सर्च कर लीजिए कि ये hashtags के numbers कितने हैं. If you are a small account, you can avoid using hashtags which has millions and trillions of views. Use smaller hashtags which has 1,000 views or 500 views or 10,000 usage. If you are a middle account, like अगर आपके 10,000 से 50,000 के बीच में followers है, then use hashtags which are kind of medium to large. Let's say 100k or let's say 300k views है. So these are few of the hashtag strategies that you can apply for posts, for reels, for videos, whatever you put on Instagram. Okay. So yes. Yeah, so that's what one of the hashtag strategy which like in very very brief I had discussed. ओके. तो रील से हम लोग थोड़ा सा हैशटैग की ओर चले गए. तो हैशटैग में अभी जैसे इंस्टाग्राम इज स्लोली रोलिंग आउट दैट कीवर्ड सर्च वाला थिंग आल्सो. तो विल दैट इन फ्यूचर मेक हैशटैग्स लेस रिलेवेंट, या फिर जो कीवर्ड सर्च वाला है इट विल सर्व सम अदर पर्पस? It will definitely serve a purpose and hashtag will not lose its importance because that is how the whole structure or algorithm is identifying content on. कि जैसे SEO है for example, Google SEO. So वहाँ पे keywords do matter and content is been searchable on the basis of those keywords. So likewise on Instagram content is searchable with hashtags. So अब ऐसा हो गया है कि गूगल पे लोग सर्च करने नहीं जाते, इंस्टाग्राम पे ही सर्च कर लेते हैं कुछ ना कुछ. रेस्टोरेंट सर्च करनी है या कोई लेट्स मेकअप आर्टिस्ट या कोई आर्टिस्ट सर्च करना है या कोई जगह सर्च करनी है. इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन गूगल दे जस्ट गो ऑन इंस्टाग्राम सर्च एंड सर्च आउट बिकॉज it has become that user friendly now. So people used to do searches on Facebook previously to Instagram, and now it has shifted from Facebook to Instagram because everyone have like masses and masses have started using Instagram and it is user friendly. So both the features are relevant and make will make sense in their particular users. ओके. सो अभी आई थिंक इंडिया में शायद कीवर्ड सर्च लॉन्च भी नहीं हुआ है.
but Right. maybe it will launch in future because I work for an account which is based in US, so I have access to that feature. इसलिए मुझे ये question आया कि चलो Right. पूछते हैं एक बार. तो ठीक Right. है, in future maybe we are expecting कि ये feature launch हो ही जाएगा इंडिया में भी. तो what do you think कि जो ये हाँ. keyword search वाला feature है, does it depend only कि हमने caption में जो word use किया है, like there is a silver bracelet, तो हमने अगर अपनी कैप्शन में Yeah. सिल्वर ब्रेसलेट लिखा है उससे ये सर्च हो रहा है, या फिर ये ऑल टेक्स्ट जो होता है उससे सर्च हो रहा है? लाइक डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दिस? I mean, both are important, even because many people are not using alt text at all. मतलब उनको या पता भी नहीं होगा कि alt text करके कुछ एक फीचर है जिसको यूज करने से आपका कंटेंट सर्चेबल हो सकता है. That's why Instagram has not totally made irrelevant of the caption. Caption is still relevant because many people are not aware about the alt text thing. तो जो भी जनरल लोग हैं वो तो कैप्शंस ही डालेंगे. लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई वुड से लाइक 80 to 70 to 80, I mean 80 to 85% people might not be aware of the alt text feature. Captions makes really sense और उससे भी content search होता है. तो जितना भी text based content है, be it captions, be it alt tag, be it keyword search, it is searchable on Instagram as well as on Google. Okay. And Wow. वो searchable होगा ही because it is you are identifying that particular content form, be it GIF की वीडियो या पिक्चर. तो वो कंटेंट से आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो टेक्स्ट से ही आइडेंटिफाई होता है जो भी लोग लिखेंगे. that is why all these platforms are really working hard to remove as much the fake content as possible कि जो मैच नहीं कर रहा है, जो unmatched things है. जैसे फोटो लिपस्टिक का है और लिखा है फूड, सो समथिंग वेरी वेरी अनमैचेबल थिंग्स जो लाइक बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से. सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम्स आर ट्राइंग टू वर्क देयर बेस्ट टू रिमूव ऑल दोज दिस थिंग्स, एंड दैट्स द रीजन they keep on removing fake accounts, they keep on removing bots from the platform. ओके. सो जो भी लोग सुन रहे हैं, आई वुड आस्क देम अगेन कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो अपने वीडियो और स्टैटिक पोस्ट या रील, उससे रिलेटेड हैशटैग्स, उससे रिलेटेड कैप्शंस ही यूज कीजिए रादर दैन ट्राइंग टू गेम द एल्गोरिदम, बिकॉज एल्गोरिदम इज स्मार्टर इन सम सेंसेस. Yes, exactly. Even if वो clickbaity things भी identify कर लेता है कि आप like YouTube में बहुत ज्यादा होता है ना कि टाइटल कुछ और है और वीडियो के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं. तो काफी बार ऐसे अकाउंट्स स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बैन कर दिए जाते हैं. शैडो बैन कर देता है इंस्टाग्राम अकाउंट को. और इवन देयर आर सम ऑफ द हैशटैग्स व्हिच आर शैडो बैन. तो ये सारी चीजें होती है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस सिनेरियो कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उसको अच्छे से वही ट्रेंड कुछ भी हो रहा हो, आपको आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो उसको आप सही से आइडेंटिफाई करवाइए एल्गोरिदम को. दैट्स इट. यू जस्ट हैव टू डू दैट वन सिंपल थिंग. रेस्ट एवरीथिंग एल्गोरिदम विल डू इट. यस यस. सो वापस आते हैं रील्स पे. वी वर टॉकिंग अबाउट आइडियाज फॉर रील्स एंड इम्प्रूविंग रीच ऑफ रील्स, और आपने बताया कि जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है उसको यूज करके भी वी कैन इम्प्रूव द रीच ऑफ आवर रील्स. तो अगर मूविंग फॉरवर्ड हम बात करें कि कंटेंट हमें, क्योंकि अपनी स्टोरीज के लिए होता है कि वी से कि इट इज स्टोरीज आर मोर लाइक डॉक्यूमेंटिंग लाइफ, बट अभी जैसे कि स्टोरीज आर एवरीवेयर, लाइक पीपल आर नॉट इवन स्क्रॉलिंग देयर फीड. तो स्टोरीज में भी कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट क्रिएशन वाला आ जाता है. इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज वी आर डॉक्यूमेंटिंग लाइफ. हम लोग उसको इवन शेड्यूल कर सकते हैं, तो हम लोग कई बार उसको प्लान करके भी डालते हैं स्टोरीज को. तो स्टोरीज एंड रील्स, अगर किसी ऐसा भी है क्या कि किसी अगर हम एक चीज पे फोकस करना चाहें तो किस पे करना चाहिए? So if you like ask me, both are equally important. जैसे because stories तो 24 hours में चली जानी है. I mean, whatever you're documenting your day on stories, it is going to disappear after 24 hours. And reels are going to stay on your feed or in the reels section. If you're not sharing it on your feed, then it is going to be there for forever, infinity times. Forever, yeah. So both at their place they are important. And there's this one trick which I'll love to share it, कि जो भी आप stories कर रहे हो दिन की, उसकी भी आप उसको आप save करके and
you can make a reel out of it. So let's say you're documenting your day. I did this for one of my clients, is that people in business or social media managers, social media experts, they do a lot of work with me Wednesdays. So in even in Western countries, so they document their day ki subah se leke sham tak, what all things they are working on. They showcase whatever art they are making, or what is their morning routines and afternoon things, evening tea breaks, whatever it is. You're showcasing your day, how you're working. So work with me Wednesdays got very popular. Simply what you can do is save all your stories on your phone, and वो हर एक snapshot का एक mix करके, and then you can just make a reel out of your entire day. So दोनों content एक साथ हो जाते हैं. You get your reel done, and you also do your stories. So this is one of the बहुत ही अच्छा strategies. आइडिया है. आई थिंक सबको एक बार तो ट्राई करना बनता है. Yes. So it's very easy also and doable, and you don't have to think anything to just music डालो, stories select करो, and do a little bit of editing inside the reel itself, and that's it. It's done. वाओ. रील्स के बाद स्टोरीज की भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हो सकती है क्या, जिसको हम फॉलो करें टू रीच मोर पीपल? So let's say हर एक चीज में अगर if you don't want to strategize, that is also okay, because वो overburden हो जाता है. If you don't want to take lot of pains in your mind. Some people love to plan, like people like me. I love to organize things. I love to plan the feed, because also I have to work for the clients as well. So for me it is very, very essential that everything is planned in advance, so that it does not create a chaos. But few of my stories are also instantaneous, like when I'm traveling or when I am not in a mood of doing story at all. It's just instant things. So stories are actually a place where you connect with your followers on a daily basis or on an informal basis. When you're not feeling okay, then also you just showcase to your followers that I'm not feeling okay, and it's just okay to say this. So it's a place, and why people love it, because everyone is in their raw form in the stories, and they're not the produced stuff. While in feed, we take a lot of care in making it, and it's a produced stuff. So sometimes you need a space to be real, to be yourself, and stories give you that space to be real, to be yourself, to just be organic, raw, in your true real self, no filters and nothing. And filter की बात मत करो. There are tons of filters on stories now. Like you cannot share you cannot see किसी का भी real face now, because everyone has at least one favorite filter जो वो हर story में अपने face पे लगा लेते हैं. So जी, मेरी stories में आपको like filters कम और like मेरे pimples ज़्यादा दिखेंगे. नहीं, because even I love one filter. पहले मैं क्या करती थी कि जैसे अपने स्वाइप कर लिया कि ये अच्छा लग रहा है. अभी इतने ज्यादा ऑप्शन लाइक इट्स, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो लगा ही लेते हैं कि अभी डार्क सर्कल्स लग रहे हैं, चलो लेट्स डू इट, ये थोड़ा सा लगा लिया. राइट. So and appearance, like if you like ask to me, I would still say this ki even if you use filters, there's no harm in it. Everyone is using it, because if it gives you happiness. If it gives you happiness, do it. If you want to showcase your true self, do it. Do whatever you love it to do, but just showcase your face on camera, and just talk to your audience. That's it. ये fear काफी लोगों में रहता है कि I don't want to showcase my face on stories, and I वो अपने लोगों के पीछे छुपते रहते हैं, या they just put out posts without their faces and all those things. So I would like to say this to all those people, that show at least once in a day on your stories. Show up yourself and talk to your audience, because people would love to buy from people and not from a bot or or just faceless company. So if you're a business and selling something, then just don't show your products every time, because people get bored. People want to know कि ये products के पीछे कौन है, who is the person who is selling these things. हाँ, exactly. So, unless you are L'Oreal, तो आप L'Oreal और ऐश्वर्या राय दिखा सकते हो, but when you are a small brand, people will connect with you rather than connecting with your products. And what you say, like there are right now thousands and millions of social media
professionals out there in world, but my community or the people who have followed me or are connecting out with me, they in real sense appreciate the content which I put out. Why? Because they can relate to whatever I say, and it is vice versa. I am also following only the people whom my vibes match. So don't every time think that there's a lot of competition out there and you cannot win every time. It's okay that you just have to be yourself, and people who would love your vibe will definitely come follow you and buy products from you. So it is, that's why very important to showcase who the real you is, what are your thoughts, why you are selling this, what is your motive, why you are there on Instagram, and why people should buy from you. Give people the reasonings, give them value, give them reason to follow you, and then see what is happening. ओके, तो चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो या आपका कोई ब्रांड हो, तो डू शो योर फेस, स्टे ऑथेंटिक, और ऑब्वियसली पीपल विल फॉलो यू. ओके, एंड खुशबू, आर देयर एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टोरीज जो हमें एक दिन में करनी चाहिए, लाइक बेयर मिनिमम भी कुछ होता है क्या? बेयर मिनिमम तो ऐसा कुछ नहीं होता है. लाइक कभी कभी मेरी खुद की स्टोरीज में एक भी स्टोरीज नहीं होती है, बट इट इज गुड इनफ दैट यू डू एटलीस्ट 3 to 4 or 5 stories in a day, because that keeps you in front of your audiences. हर एक बार जब आप Instagram खोलो तब आपको कुछ accounts स्पेशली आपके first 10 accounts में मिलेंगे, and it is most obvious that you'll click the first person's story and then you'll just keep on scrolling, and then जब आप बोर हो जाओगे तब उसको आप बंद करके रख दोगे. No one will search your name and then go to your stories. It would be like whoever comes first on my feed, I'll watch their stories. तो अब भले ही आप 5 स्टोरी डाल रहे हो दिन में, तो स्पेस देम आउट रादर देन एक साथ 5 स्टोरी डालने के, राइट? हाँ, yes, space them out, and at least make sure when you are posting, do more stories, because when you're posting a new post, people has to know. So instead of just saying that there's a new post, there's a new reel, you can also build a story around it, right? For example, if you are having a new post about let's say about your product, तो वो प्रोडक्ट के पीछे की कहानी से शुरुआत कीजिए स्टोरी में. दैट let's say it's a beauty product, let's say it's a cream product, right? तो वो किससे बना है? let's say एलोए वेरा से बना है. तो you can start your stories through just showcasing an aloe vera plant in your garden, or you can use any googled picture and start with a caption that, let's say, why aloe vera is useful, and you can put 2 more stories about the benefits of aloe vera and why you use it particularly for your skin, and benefits which are rare and people don't know, something like that. You can start sharing, and then check out my new post which is based on the cream which is based on aloe vera. So you have to build up the story. You have to make your audience ready about what is coming up next. ओके. तो इनफैक्ट आई थिंक जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और यू आर डूइंग अ कोलैबोरेशन विद अ शैम्पू ब्रांड, तो मे बी यही सेम स्ट्रैटेजी आप उसमें भी यूज कर सकते हो कि मान लो शैम्पू में एलोवेरा है या मे बी टर्मरिक है. आई डोंट नो शैम्पूज में, आई डोंट नो टर्मरिक होती भी है कि नहीं, बट मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट एंड देन शो कि ये प्रोडक्ट है, तो अगर आपको टर्मरिक के बेनिफिट चाहिए अपने बालों के लिए तो यूज दिस शैम्पू, ऐसा करके. हाँ, you have to, exactly, you just have to think कि अगर आपको कोई बोलेगा, I mean, check this post now, you yourself will be not going to that account and check that post. आप बोलोगे और लोग करेंगे ऐसे जरूरी नहीं है. So they will only do it when they feel like. So वो feel like कब होगा? जब आप उनको emotionally drive करोगे अपनी stories के साथ. So that is why it is important कि जैसे हम it's like a movie, मूवी का ट्रेलर हम देखते हैं. अभी तो नेटफ्लिक्स पे इतने सारे ऑप्शंस है, तो हम लोग सब कुछ नहीं देखते हैं. लाइक जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स वो लोग कर ले, वी विल ओनली वॉच दोज थिंग्स व्हिच रिलेट्स टू अस. तो वो कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं? वी सी द ट्रेलर देख के अगर मूवी ऐसा लगा कि अरे ये तो मजा नहीं आएगा, छोड़ो, नहीं देखनी है, तो नेटफ्लिक्स होते हुए भी वी विल नॉट वॉच दैट मूवी, राइट? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
हाँ. अभी मतलब नॉट नेटफ्लिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पर मतलब वो खरीदने के बाद तो उसके अंदर जितना भी है वो सभी कुछ देख सकते हो ना आप. Yeah, बट yeah, but you आर यू don't watch. वॉचिंग ईच एंड एवरी प्रोग्राम? नो. सो No. दैट इज द थिंग. So I like that analogy of Netflix, क्योंकि कई बार Netflix बहुत heavily promote कर रहा होता है किसी चीज को, but I don't want to watch it and I don't watch it, right? Okay. Exactly. So that is that is the logic. So mere, I mean, whatever the one simple advice that I give Mhm. everyone out there, whoever wants to do social media marketing, is that apply the logic of your life into Mhm. social media, and everything will make sense to you. वाह, ये मेरी पॉडकास्ट का टाइटल होना चाहिए. लॉजिक ऑफ लाइफ. ओके. एंड अभी जैसे वीडियो कंटेंट पे भी बहुत फोकस कर रहा है इंस्टाग्राम या फेसबुक या मे बी Mhm. अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो. तो डू यू थिंक कि इंस्टाग्राम तो नहीं मानता है कि दे आर boosting videos more compared to static post, but is it true, or is मतलब video content has an upper hand? Video content has an upper hand. Why? Because it's again a logic that if you ask people to read, how many of you will, read something? Rather, you will watch something more. If I tell you to read 500 pages book, in comparison to watching the same content in a form of a video, you will absolutely like 100% say कि अरे भाई वीडियो दिखा दो, इतनी बड़ी लंबी बुक पढ़ने का कौन अभी टाइम पढ़ेगा, नहीं है. राइट? हाँ. This is majority of people who हाँ. are really passionate about reading will definitely read. Okay, so I'm not denying that people are not reading it, but majority, if you see like 80% people, like entire world, majority of them would prefer videos, and that's why videos are more comfortable content. ओके. जैसे जो इंस्टाग्राम होता है, इट अलाउज 1 मिनट का वीडियो ऑन द फीड. तो और Yeah, स्टैटिक पोस्ट, तो उसके कंपैरिजन में यू आर सेइंग कि 1 मिनट का वीडियो विल डू बेटर देन द पिक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर पिक्चर ऑफ योरसेल्फ. exactly. And even posts will work nice if it is very, very attractive, because visuals do make sense on Instagram. It's all about visuals. I'm not saying that visuals will not work. Post हाँ. can also work better, but you have to decide what goes in a post and what goes in a video. So वो balance हर एक account का अलग होता है. What goes in an IGTV, what goes in a feed video, what goes as a post, and what goes as stories, and what goes as reels. Because अभी इतना सारा content format inside Instagram हो गया है that you have to actually sit and plan a little bit about your content कि क्या चीज कहाँ पे जाएगी. You can think it as a website. जैसे website में अलग अलग tabs होते हैं ना, Wow. home, Yeah. contact us, services. So हर एक tab का अलग reason है. So just think it as a website and place out your content. So ऐसा भी नहीं है कि आपकी let's say if you're having 1,000 followers, तो हर एक लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका अलग होगा. कुछ लोग सिर्फ IGTV वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ रील्स देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टोरीज देखते हैं. सो यू नेवर नो, everyone is your audience. Right. Yeah, that's the right So way that to is the think. reason if you're a business, you have to provide content for each of your audiences. ओके. सो काफी बड़ी बड़ी बातें हो गई, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल भी हो गया, बट आई एम श्योर कि जो भी सुनेगा उनको हेल्प मिलेगी. एंड खुशबू हैज ऑब्वियसली ट्राइड टू एक्सप्लेन इट in the simplest way possible. So Khushbu, before we wrap up, I would like to know your 5 action steps to improve Instagram presence in this year. 5 action steps to improve Instagram presence would be definitely, first of all, reels. Make lots and lots of reels, whatever is possible. That is the basic thing that you have to do it. If you enjoy it, better. If you don't enjoy it, try to enjoy the process. But you do it if you really want to be present, like really active on Instagram. So do reels. Second is make use of all the content that is available, like matlab post, IGTV, stories, jo bhi presence hai. Try to balance out in your entire week. जैसे एक दिन Instagram किया, IGTV किया, दूसरे दिन reel किया. So you can, that would be one of the tip that I would like to give you, that you can invest your time in proper content creation rather than
just baseless content creation. The third would be show up yourself on stories. Never miss out on showing up yourself. Show your face, talk to your audience, take polls, ask them questions, answer their questions in stories, stuff like that. Be present on stories, be yourself and be genuine, be transparent. That is the third thing. Fourth is proper use of captions and hashtags. Whatever content that you are sharing, describe it very nicely and segregate in the proper hashtags. Use all the 30 hashtags that is available. You can sometimes avoid using all 30. You can use 20, 25, or maybe 15. It's okay. But use the right and proper and well-researched hashtags. And fifth is definitely don't waste too much time on Instagram. Plan stuff up. Because you get too overwhelmed and then it affects your mental health a lot, that why my account is not growing. So don't waste time on Instagram. Instead, use it productively. Use to talk to people, have conversations, do a lot more positive stuff on Instagram, which motivates you to make more content, instead of being in that negative space. Try to use it positively. So I guess these 5 things, if you do it, you'll definitely, get success on Instagram. Okay. अब आप हमें ये बताइए कि आपसे कनेक्ट होने का बेस्ट तरीका क्या है, where we can find out more about you and your work. Definitely you should follow me on Instagram because I'm super hyper active on Instagram. And my handle is Dr. Khushbu Pandya. If you want to have lots of educational stuff, my company puts out amazing content, which is Convophilia. Okay, I will link both of these accounts in the show notes and also in this description of the podcast. So आप easily link पे click कीजिए और डॉक्टर खुशबू पांड्या से connect कीजिए for all your social media का जितना भी आपको ज्ञान चाहिए उसके लिए. These are the best places to connect. And Khushbu, thank you so much for sharing your sneaky tips also कि आप ऐसा करके भी अपनी presence को improve कर सकते हो. ये जो action steps होते हैं ना, I love them and my audience also loves this. Thank you so much, Maitri, for inviting me to Little Fixes podcast. I really loved your idea, and you are actually inspiring with your podcast and the work that you're putting it out. So yeah, thank you so much once again for inviting me here and introducing me to your audience. Thank you so much. तो Instagram के ट्रेंड्स को फॉलो करना और उनके अकॉर्डिंग ग्रो करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपके पास सिंपल एक्शनेबल टिप्स हों जैसे कि अभी हमें डॉक्टर खुशबू पांड्या ने दी. तो डू फॉलो दीज टिप्स और अगर आप इनको फॉलो करते हैं, आपके लिए वर्क करती हैं, तो टैग लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट एंड डॉक्टर खुशबू पांड्या इन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज. सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट ऑन एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सॉन, गाना, जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं. और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे सुनते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज रेट एंड रिव्यू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. इट हेल्प्स अस रीच मोर पीपल. तो अब हमारा जनवरी का ये लास्ट एपिसोड था एंड आई एम श्योर कि वी आर एंडिंग जनवरी विद अ बैंग एंड विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग फरवरी विद अ बैंग. तो नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करो, लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.